gas welding. The American Welding Society calls this process gas tungsten arc welding, or GTAW. You might also hear it called Healy arc welding. TIG welding uses a tungsten electrode. Tungsten has an extremely high melting point. When you TIG weld, the electrode gets hot, but it doesn't melt. We say that it's a non-consumable. Yeah, you can move forward. Thank you. ये हमारा it is a submersible pump. You can see the discharge थोड़ा कम होता है compared to surface because इसमें पानी we have to get from beneath the ground against the gravity. So the discharge is automatically not that much, but it is good. Mostly farmers, horticulture, agriculture, everyone can avail the benefit of this scheme. ये यहीं कश्मीर का ही है? बिल्कुल सर, पुलवामा का। Any आपका कोई क्वेश्चन है सर? Probably you have to run through the slide. No, it's an scheme हमारी वाली you can ask it. पुरानी स्लाइड से ये जो how long it will जो ये पैनल्स अगर हैं कितने साल ये चलेगा वो से? See sir, इसमें क्या होता है हमारे जो अभी हम मॉडल्स यूज कर रहे हैं primarily they are polycrystalline models. As per the research and R&D जो उसका हुआ है, after 25 years इसकी efficiency will decrease by 10% after 25 years. So अगर आज ये for example 90% पे चल रहा है, after 20 years it will go to 80%, and that is good generation. We have installed many plants 15 years back and they are doing good. इसमें जो ये है फार्मर्स के लिए इसका कुछ छोटी स्कीम है लाइक डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी ऐसा कुछ है? इसलिए तो फार्मर्स के लिए तो नहीं डोमेस्टिक पर्पस के लिए घर के लिए अगर हम चाहें आज तो हर घर में वाटर पंप्स हैं या ट्यूबवेल्स हैं वगैरह उनके लिए है कुछ? सभी फार्मर्स के लिए मैंने बोला जहाँ पे आपका फील्ड है विदाउट ए कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो यू के वहाँ पे ये लगेगा सर आपको। व्हाट्स द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड जो इसको रिक्वायर्ड है? area of land is not important. Like I said, it should be agricultural based. Like कहीं पे किसी का एक आधा ही कनाल क्यों ना हो? Is it हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। Domestic के लिए अगर हम लोग use करें तो instead of using land, we can use our roofs as well. For this scheme, मैम नहीं basically इसमें guidelines are being set by the Ministry of New and Renewable Energy. इसमें क्या होता है मैम हमारा एक मैनुअल ट्रैकिंग सिस्टम होता है। ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये पोल पे लगते हैं and depending on the time of the year, the orientation of this module. अभी देखिए क्या होता है मैम अगर कोई फार्मर है उसको फॉर एग्जांपल सुबह जनरेशन की जरूरत है और उसका घर का छत इस वेस्ट फेस है तो मॉड्यूल वेस्ट की तरफ होंगे इन द मॉर्निंग वैसी जनरेशन नहीं होगी उन पे तो हाउस पे इट इज नॉट एडवाइजेबल एंड मिनिस्ट्री हैज क्लियरली सजेस्टेड। देखिए मैम जहाँ पे हाउस आ गया मतलब वहाँ पे कनेक्शन होगा और इस स्कीम का यही फंडा है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। पहला वही जिससे मैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ नहीं। देखिए अगर मेरी यहाँ पे मेरा मकान है 100 फीट के बाद मेरी जमीन है उस पे कुछ लाइटिंग का प्रोविजन नहीं है वी कंसीडर इज अनइलेक्ट्रिफाइड वहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर डोमेस्टिकली है फॉर फार्मर्स मतलब आप कह रहे हैं आपको घर का ट्यूबवेल चलाना है वो देख सकते हैं हम मतलब ऑन पेपर तो नहीं है सर वी कैन सी टू इट। तो मार्केट में हो सकता है सर मार्केट में तो इजीली मिलेगा बट इस कॉस्ट पे तो नहीं मिलेगा। दिस इज मतलब सबसे सस्ते पंप्स मिलेंगे आपको और बेस्ट क्वालिटी की। इससे पहले हमारा जो इंस्टॉल था टाटा का वो टाटा के पंप्स यूज कर रहे थे तो हमें एक फार्मर आया उसने बोला न ब्लाक पाने उसको वही पंप 4.5 लाख रुपए का पड़ा जो हमारे थ्रू उसको 50,000 का पड़ रहा था। इसके पंप भी डिफरेंट होते हैं जो नॉर्मल जो सबमर्सिबल मान लीजिए वही है सर ये बेसिकली ये डिफरेंट पंप्स होते हैं जी सर थोड़े डिफरेंट होते हैं वे स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं मतलब इसी प्लांट के लिए पंप बनता है। It cannot be used on electricity नहीं सर इट कैन नॉट बी यूज्ड इट कैन नॉट बी यूज्ड। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर इसकी क्लीनिंग में उससे तो मतलब आ जाता है ना थोड़ा हिंड्रेंस अगर हमारा रेनी डे हो गया तो हमारे पैनल्स जो है उनमें एक लेयर आ जाती है तो उसमें क्लीनिंग का बारिश इज गुड अगर बारिश नहीं होगी डस्ट की लेवल यू कैन क्लियर इट सिंपली इन द मॉर्निंग और इवनिंग विद द हेल्प ऑफ अ मॉप होता है ना थोड़ा पानी मार के आप क्लियर कर सकते हैं बिकॉज ये तो एक्सेसिबल है ये जमीन पे लगता है। सर आई हैव सीन लाइक इन अदर कंट्रीज यहाँ के कंपैरिजन में अदर कंट्रीज में बहुत ज्यादा मतलब एक्सेल कर रही है तो उनका जो क्लीनिंग एफिशिएंसी वो बिल्कुल ही डिफरेंट है तो वो बिल्कुल ही मतलब उसके अगर हम लोग मतलब देखें
तो कॉन्ट्ररी पे हमारा जो है हम इसलिए पीछे क्योंकि हमारा क्लीनिंग का वो ये है या फिर क्योंकि सनलाइट तो मतलब इट्स मैं बताऊंगा क्या है बेसिकली 2 साल पहले हमारा डिपार्टमेंट का किसी को पता भी नहीं था सोलर का कोई डिपार्टमेंट भी होता है सो उतना हमारा इसका ये नॉलेज नहीं है स्कीम की अदरवाइज दिस स्कीम वाज हियर सिंस लॉन्ग टाइम बट यहाँ पे लोगों को पता नहीं था ऑब्वियसली बाहर स्कीम स्टार्ट हुई है वहाँ पे क्या होता है देयर इज अ सोलर पावर क्लीनर ऑफ द सोलर पावर प्लांट जिसका क्लीनर होता है वो भी सोलर पावर पे चलता है यहाँ पे भी हमने कहीं कहीं कुछ साइट्स पे क्या किया हमने जो सोलर लगता है ना उसी की सप्लाई से हमने स्प्रिंकलर लगाए हैं दे वर्क ऑन द डीसी पावर रियल टाइम में तो आपको कभी भी दिन में चाहिए आप स्प्रिंकलर ऑन कर सकते हैं अभी थोड़ा कॉस्टिंग का उसका इशू आ रहा है बिकॉज यहाँ पे क्लीनिंग का बड़ा इशू है नॉर्मली बाहर क्या होता है जम्मू दिल्ली में स्लैब पे लगा होता है बंदा सीधे मॉप लेके चला जाएगा यहाँ पे छत पे लग गया तो फिर मुश्किल है वी हैव टू रिलाई ऑन द रेन गॉड्स बारिश कब गिरेगी कब क्लीन हो जाएगा तो यहाँ पे अभी वो भी आ रहा है इट्स नॉट दैट फार बट अभी टाइम लगेगा बेसिकली व्हेन वी स्टार्टेड इट तब हमारा जो सबसे बड़ा मॉड्यूल आता था वो 250 वाट का आता था आज की डेट में सबसे बड़ा मॉड्यूल हमारा 710 वाट का आता है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स एंड इट इज अ वेरी फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी सो विद इन 2 or 3 इयर्स वो चीज भी आ जाएगी जब पे Sir, do you have any provision for solar tracking, automatic solar tracking? नहीं सर वी ऑनली हैव देखिए सर सोलर ट्रैकिंग का ठीक है बट फॉर दैट वी नीड टू इंस्टॉल इट ऑन द ग्राउंड यू कैन नॉट इंस्टॉल अ सोलर पावर प्लांट ऑन द रूफ देन डू द सोलर ट्रैकिंग जो हमारे ये पंप्स है इसमें हमने क्या रखा है देयर इज अ मैनुअल सोलर ट्रैकिंग सिस्टम to start your own entrepreneurship. As far as the content of the training program is concerned, no doubt we will be starting from the basics. We will tell you how to cultivate, how to select the lands for cultivation of medicinal and aromatic plants. But we will be also focusing on the latest techniques of the cultivation like aeroponics, hydroponics and tissue culture. That will be also dealt with. After that, we'll be also telling you the latest extraction techniques. It will not be limited to the cultivation what we used to do till now. In this training program, our focus would be on the practical part of the training. So most of the component which is actually being covered in this training will be taken care by the subject experts. When I'm talking about hydroponics, there is a hydroponics specialist, not only known in our state, our union territory, but he has a reputation of developing some good hydroponic units throughout the country. Similarly, we have invited some experts from the industry. We'll be having with us most probably tomorrow one of the leading expert, Dr. Badri Narayan. He has been working with Dabur. He has been actually heading their bioresource division since last 32 years. Similarly, I have also requested my colleagues in this faculty. They have very good expertise in their particular domain. I have also requested the dean of the faculty, Professor Siyan Gomusa. He will be also sharing his experience with you. So, to cut short my talk, I would like to request you once again, please take fullest out of it. Try to learn as much as you can during this 1 week training program, and after that, it's not going to end here. You are now part and parcel of this faculty. You are always welcome whenever you have any kind of issue or you want some kind of guidance, not only from me. I'm sure each and every faculty member of this faculty would be very glad to help you. Thank you once again. Professor Naseem Zafar Sahab, head SBS Vision, has joined us, and Professor Khurshid Sahab, head Wildlife Division. So I once again welcome you all, and I hope that this training will be very fruitful for all of us. Thank you. Thank you, sir, for enlightening us and for providing us insights of the program. Kindly join me in welcoming our esteemed chief guest for the inaugural address. Let's invite Professor Sajjad Ahmed Gangu, sir, Dean, Faculty of Forestry, to the stage.
Assalamu alaikum and good morning to all of you. First of all, we welcome the trainees who have joined this course. कितने दिन का है? Sir, 1 week. 1 week. For 1 week. 1 day. 1 day. For 1 week course. So we welcome all of you. एक करके थोड़ा इंट्रोड्यूस करो, अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हैं. आप शुरू करो. बैठ से बैठ के बोलो कहाँ से आए. नाम बोलो अपना. Just introduction. बैठ बोलो. बोलो नाम क्या? Assalamualaikum. My name is Watlar-Ganderbal. I'm from Srinagar and I have done my master's in botany from University of Kashmir. Good, sir. Welcome. I'm pursuing my master's in environmental science. Environmental science. कहाँ से? एक रूम में. Sabha from Ranawari. I'm still statistics में अभी PhD. तो जैसे पाइप से बोलो नाम बोलो. मेरा नाम सईद मोहम्मद मुस्तफा है. मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में. मैं इसके साथ 2019 के साथ वाबस्ता हमारे साथ वाबस्ता है. ये टैग दे दो. Assalamu alaikum. My name is Shaukat Ahmed Ginai. I am from district Bandipora. I have recently done my Bachelor of Technology in Software Engineering from the Technical University. कहाँ से? Lucknow. लखनऊ से. I am Manish Sharma and I am doing MSc in Application here. My name is Sanika from Kerala. I'm doing my master's in. You have also joined. Hello. My name is Umar Riyaz. I'm currently pursuing MSc Forestry in the University of Kashmir. यहीं पर कर रहे हो? बेर से वगैरह मानी कि बेर से एमएससी कहाँ So some of the trainees are our own students, but most of them are outside. So we welcome all of you for this 1 week training course in Government of India sponsored Advanced Entrepreneurship and Skill Development Program on advanced techniques in cultivation, processing, utilization of medicinal aromatic plants. So when we say medicinal aromatic plants, particularly in the context of Kashmir, not in the whole of India, we see that there are some herbal people who just practice this medicinal aromatic plant and they just give in small packets or जिसको पूड़ी बोलते हैं, पूड़ी में दवाई देता है, and that is medicinal aromatic plants. But the trend has now changed. But throughout the world, it is. But in our scenario and in the scenario of whole India, that scenario is still lies the same in the minds of the people. That medicinal plant is a small business. It is a small business, and it has some link with the old man who practices this medicinal aromatic plants and gives prescribes medicine to a person and gives them in foodies में देता है, कुछ herbs देता है और herb से इंसान को शायद कुछ थोड़ा बहुत इलाज हो जाता है, and that is all. And that is all. But the trend has changed. It is now a billion dollar trade throughout the world of medicinal aromatic plants, which is being traded throughout the world. And most of the herbs are being cultivated throughout India. But our region of Jammu and Kashmir, while there are specific herbs and these aromatic plants which grow in temperate regions only, and they don't grow anywhere else. They don't grow in the rest of the India. The rest of the India in temperate regions only, and we have the monopoly for that. And our region can grow all types of plants, which example, which you will see that although lavender is our own plant, but it is a native of Mediterranean region, and it has spread to most of the climates wherever there is this temperate climate. They cultivate the lavender there. But there are so many other plants while we wish to have commercialization, because that old scenario needs to be changed now.
Now the business has to be done on a large scale. But one is the now again another question arises that these medicinal plants we usually used to collect them from the forests. These herbs, they are all being collected not only in Kashmir but throughout the world and throughout India. All these medicinal plants used to be collected from the forests. And then what used to be done, and yet some pharmaceutical company used to trade it in bigger volumes, and they used to take out from the forest. And what has happened to the forest, this need not be elaborated, but just to tell you that most of the species have either gone threatened or they are almost extinct. You may know if a plant which was growing, which is still growing in Kashmir, we know it by the name of kot. All of you might, जो भी कश्मीरी आपके पास यहाँ है, उन्होंने kot का नाम सुना होगा. और सिर्फ 100-150 साल पहले, when there was a Maharaja here in 1856, he had sold kot. He had sold water, exported kot from Jammu and Kashmir for 1 lakh rupees in 1856. अगर उसको इसको करें वो 100 करोड़ रुपीस होगा. 1 लाख 1856 में with it will be 18,000 crores. But if we try to locate kot in our forest right now, it is not available. It is not available in that quantity. It's thrown anywhere in the forest because it has been exploited to such an extent that it is not available. Similarly, there has been trend in the last decade or so. There was a plant in our forest known as the name of Tripotri, and people has been exploiting this Tripotri from forests in such a quantity that it has almost now vanished from our forests. So there are so many such plants which have almost now gone at similarly podophyllum. What has happened to podophyllum? If you try to locate in the forest, I don't think you'll be able to find podophyllum anywhere. So this is some of the what has happened to our medicinal aromatic plants in our forest. Now what we contemplate now, we contemplate that we should cultivate these plants. We are developing the techniques, and we have developed techniques for most of the aromatic plants which we can cultivate and which we can cultivate in the valley. हो सकता है कुछ plants नीचे cultivate नहीं कर पाएंगे, but in the high, when we go higher, a bit higher, we can cultivate in the higher reaches also. And where do we want to reach? We want to reach the people who live on the fringes of the forests. Their forefathers and even their immediate fathers, they used to collect these herbs from the forest and used to sell it to the herbal people or to the traders who used to take these herbs to outside the world, outside Kashmir. So this we need to cultivate now there. Now we have taken up the process of many of these such plants, but there are so many other plants which need to be cultivated. And then now the other question is, we don't want to sell these plants in raw form. पहले क्या होता था, जैसे कोट था, कोट यहाँ से ट्रकों में ले जाते थे, तो बाहर क्या होता था हमें भी नहीं पता था बाहर क्या होता था, कहाँ जाता था. इवन ये ट्रिलियम है जिसको मैं बोल रहा था बाय द नेम ऑफ त्रिपुत्री, और बाहर इसको नाग छतरी बोलते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल में नाग छतरी बोलते हैं, और वहाँ से भी एक्सपोर्ट होता था. और सिमिलरली हमारे पास एक और प्लांट है, इसको बोलते हैं पोस्थल, टेक्सस की स्पीशीज है. उसका जब अचानक कैंसर की दवाई निकली तो हमारे फॉरेस्ट में टेक्सस ही खत्म हो गया. सब लोगों ने उसका क्या वो बारक उठा के ले गए, जब तक वो टेक्सस ही हमारे जंगलों से खत्म कर दिया. तो ये काफी ऐसे प्लांट्स है जो which are getting vanished from forest, and we have produced some Texas plants here. जब फील्ड में जाएंगे टेक्सस प्लांट देख लेना, हमारे पास भी टेक्सस प्लांट है जो कहा जाता है बिल्कुल हायर ऑल्टीट्यूड पर उग सकता है, लेकिन लोअर ऑल्टीट्यूड उग सकता है if we create some kind of ecosystem for that, और हमने थोड़ा सा शेड दे दिया उसको और अच्छे वो ग्रो कर रहे हैं. तो ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं. अब चूंकि आप आए हैं ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, अगर आप रियली करना चाहते हैं, आपको सब प्रोडक्ट में घुसना नहीं है. अब देखो, आप जहाँ रहते हैं इर्द गिर्द में जब भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट में देखते हैं हम कि किस चीज़ को हम उगा सकते हैं और किस चीज़ को मार्केट है, और जिस चीज़ को मार्केट होगा उसी प्रोडक्ट को उठाओ और उस प्रोडक्ट को फिर उसके प्रोडक्ट बारे में पूरी वो कंप्लीट डिटेल देके फिर उसके बारे में प्रोडक्ट बनाओ,
फिर फंडिंग के लिए भेजो किसी को. Even by this certificate, you will be able to get you will be given a good amount of loan from EDI also. EDI भी लोन देता है ऐसे मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स पर अगर एक खास प्रोडक्ट आपके पास है कोई बनाने के लिए. मैं कहता हूँ हमने कुछ सर्वे किया है अभी भी जंगलों में हमारे साथ अभी काफ़ी डिमांड में है एक प्लांट, बहुत सारी डिमांड. वो कह रहा है टन्स में दे दो हमको. वो है वो क्या कहते हैं शीतकार बोलते हैं उसको. दैट इज क्या कहते हैं फिटिलेरिया रॉयलियाना. दैट इज फिटिलेरिया स्पी. वो कह रहा है टन्स में दे दो हमको. और मुझे लगता है दैट इज इजी टू कल्टिवेट क्योंकि उसके नीचे राइजोम होता है. राइजोम को काफ़ी जैसे पटाटो उगाते हैं ना, पटाट की तरह उसको उगाना है और इट इज इजी टू कल्टिवेट. लेकिन जो कल्टिवेट करने की प्रोसेस शुरू की हो और वो वही प्रोसेस शुरू करेगा जिसको ये पता होगा कि मुझे इसको कल बेचना है और इसको रॉ फॉर्म नहीं बेचना है, एज अ प्रोडक्ट बेचना है. जैसे हमने यहाँ पर शुरू किया, हमने लेवेंडर यहाँ कल्टिवेशन का लेवेंडर की काश्त हमने शुरू की. हम क्या कर सकते हैं, हम लेवेंडर फ्लावर्स ऐसे बेच सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. हमने लेवेंडर के प्रोडक्ट्स यहाँ बनाए. लेवेंडर की पहले हमने बिल्कुल प्रोसेस करके उसका तेल निकाला, लेवेंडर ऑयल. Lavender oil is a very costly oil. It costs about 15,000 kg. तो उसको हमने फिर प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की हमने. तो इस तरह से जब आप ट्रेनिंग करेंगे आप पहले एक सब प्रोडक्ट्स मत देखो एक साथ. अगर कोई रियली करना चाहता है ये काम तो उसके लिए अच्छा फील्ड अच्छा है उसके लिए. तो वाइल्ड फील्ड भी है लेकिन कोई एक खास प्रोडक्ट उसके बारे में पूरा सर्वे करके फिर उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ. एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट करो. we hope not only but we are rather sure that you will get the funding for the project अगर अच्छा प्रोजेक्ट हो. तो इस तरह से हमने कई प्रोजेक्ट शुरू करे हमने. तो लेवेंडर हमने शुरू